पे कोई भी कोरोना नहीं हुआ है किसी भी तरह का। And it's worth of 5 lakh rupees. They are over 200 years old. अब हमारा मेडिसिन वाला एरिया Because of all the Ayurvedic herbs, किसी भी और लोगों को मालूम नहीं है सर इसके बारे में। pure natural mineral water. Used during Mahabharata. तैयार हो रही है। अच्छा ये अरे मैडम जी आप ऐसे डर रहे जैसे कि वो आपको ही देखेगा कि खा गए। You deserve it. Good morning, people. Good morning. It's day 4 at Club Mahindra Mashobra. It's 7 in the morning and we're heading out for a jungle trek right now. This is our guide over here. हाँ जी, आपका नाम? शांडिल। मेरा नाम प्रेमचंद शांडिल है जी और काफी वर्षों से मैं गाइड का ही काम कर रहा हूँ। The starting point is a bit steep, but then it gets much better after this. So it's a total 5-kilometer trek, going and coming. Takes about 1.5 to 2 hours. So very strict rules here by the government. So this oak tree which has fallen here since so many years, it is not allowed to touch it. So it's just going to decay on its own with time. Photo please. It's a pine tree and it's worth of 5 lakh rupees. और सबसे कॉस्टली लकड़ी है देवदार। ये देवदार वृक्ष है जी, देख रहे होंगे आप। जो ये सारा जितना मोटा मोटा दिखाई दे रहा है ये सारा देवदार वृक्ष है। So these pipes that you see here on the ground, they have been laid from the British time. They are over 200 years old. So basically they are used to pump water to the President House, which is up on this hill. So behind me over here you can see leaning tree of Mashobra. Today is quite a sunny day. It's only 7:45 and the sun is out, which wasn't the case yesterday. We went cycling in the afternoon and it was cloudy throughout. Perfect weather. So now this sun is making it a bit hot for this trek. अब हमारा मेडिसिन वाला एरिया शुरू हो गया। ये क्या महसूस कर रहे हैं आप वहाँ में और यहाँ में? थोड़ी मीठी सी खुशबू आ रही है। So now we have entered the medicinal part of the forest. So we can actually experience a sweeter smell over here, probably because of all the Ayurvedic herbs in this part of the forest. And the air is incredibly fresh, incredibly fresh. I mean, I'm not feeling even one bit tired right now. It's really refreshing. So this water that you see here flowing on the ground, it is actually mineral water coming out of the ground and flowing down the slope. Pure natural mineral water. गाय आती है, कोई भी जानवर आता है वो पानी पिए, तो इसलिए मैम हम इस तरह के बना रखे हैं। मैम स्नो गिरता है तो इस पे मैम अगर आइस जम जाती है तो ये वेस्ट वाटर है। अदरवाइज मैम अगर आइस नहीं जमती है तो मैम ये प्योर मिनरल वाटर है। So basically when this water comes out of the earth, it is at a very low temperature. So when it snows, that water does not freeze since it's already cold. Wow, so aromatic. Really, really strong aroma. ये किसी भी और लोगों को मालूम नहीं है सर इसके बारे में, क्योंकि सर मैं प्रोफेशनल गाइड हूँ। मैं काफी वर्षों से गाइड का ही काम कर रहा हूँ। देखें सर इसी तरह का लीश ये भी है, आप सहम देखें, और लेकिन इसमें नहीं है। ये तो प्लेन है। ये हवन में यूज होता है। हाँ, हवन सामग्री में यूज होता है। आपका धूप इसका बनता है। गूगल सर यहाँ पे कोई भी कोरोना नहीं हुआ है किसी भी तरह का। अच्छा, पूरे हिमाचल में जी। जो भी बाहर से ही है मैम, मैं अपनी बात करता हूँ, हमारे गांव में किसी को नहीं हुआ जी। और हमारे जो गांव के लोगों की एज है तकरीबन, यहाँ के जो वृद्ध लोग हैं वो 90 क्रॉस कर जाते हैं जी, 85-90। मैम यहाँ पे जानवर लेपर्ड, मंकी एंड रैबिट। What is this? Please explain. This is the paper that was used during Mahabharata and Ramayana to write, because उस टाइम पे of course paper वैसे available नहीं होता था, so he just got this from this tree. So it's like a bark, like this. So they used to write on these bark sheets. छोटे बच्चे थे तो हम लोगों को भी हम इंक सर खरीद के नहीं लाते थे, पूरी जंगलों से हमारे माता पिता लाते थे। और आप देख रहे होंगे सर ये इंक, रेड कलर इंक। ये जो इंक है ये सिर्फ ओक से बनती है जी। ये देखें ओक जो गल रहा है, ये देखें सर, ये मैम ये इससे तैयार हो रही है। अच्छा, ये जो ओक गल रहा है, ओक गल रहा है।
Oh, it's very soft. मैम ये इसमें जो अगर आप मैम गुड़ या चीनी डाल देंगे ना मैम, ये गाढ़ी हो जाएगी मैम। Oh, right. Makes sense. हाँ जी। तो फिर वो फेदर से लिखते थे इसको? हाँ हाँ जी, ये दो। See, you can write. That's nice. So this is the decaying wood and here is the ink. So cool. हमारे पास पेपर हमारे पास जंगलों में है, इंक हमारे जंगलों में है, लेकिन फिर भी हम लिखने का सामग्री हमारे पास जंगलों में है, मोरपंख। हाँ। क्या बिल्डिंग मतलब? ये ताज होटल है जी, और इसी के साथ ही महिंद्रा का जो है तीसरा रिजॉर्ट जो है तैयार हो रहा है। तो So there's a third Mahindra resort which is under construction at Theok, 16 kilometers above Mashobra, close to Narkanda. So I don't know if you'll be able to see it on the camera, but there's a Taj property there, right on the peak of that mountain. And the new Mahindra property is also coming up close to it. Oh wow, what a beautiful view of Mashobra from here. हाँ जी, वो थोड़ा सा इधर को है जी। तो ये जो सामने जो बिल्डिंग है ये मशोबरा है कि ये मशोबरा ही है और वो पीछे वो नाल दे रहा है? हाँ अभी नहीं जा पाएंगे क्योंकि सर प्रेसिडेंट साहब आए हुए हैं ना सर, ऊपर हमारा आर्मी वाले होंगे तो हम लोगों को दिक्कत करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि हिमाचल में मशोबरा में सबसे महंगी सबसे कॉस्टली प्रॉपर्टी जो मशोबरा है सर, क्योंकि सर ये हिल में आती है और पहली बात तो यहाँ राष्ट्रपति है, प्रियंका गांधी हाउस यहाँ है, और सेकंड सर जितने वीआईपी लोग हैं मशोबरा में, HSIS और IPS लोग, आर्मी के चीफ तक का सर यहाँ पे फ्लैट्स यहाँ पे उनके अपने फ्लैट्स हैं। यहाँ पे 2 BHK 1.5 करोड़। 1.5 करोड़। ये तो एकदम बॉम्बे वाला रेट हो गया। 1 करोड़ 20 लाख 30 लाख। And I wonder how this car got here. I have no idea. The view from here is absolutely breathtaking. Check this out. मैम आप आ जाओ। So there's some yak coming here up the trail. So we are hiding here behind a fence. तो पुराना वाला देख लिया मैंने वहाँ। वाह शिकी है लो भाई। ठीक है कोई नहीं, ठीक है छाड़ी ने काम थी। तो क्या करो ठीक है। Man, they're huge. Look at the tail. बड़ी आते की थी नहीं एक मेरे नहीं ले आओ। परफेक्ट फ्रेम। कालो। पलटेगी तो नहीं? ये रहा अरे मैडम जी आप ऐसे डर रहे जैसे कि वो आपको ही देखेगा कि खा गले। बड़ी तगड़ी वो इंसान के बीच ही रहता रोज। पता नहीं कितने टूरिस्ट आते हैं, कितने चढ़ते हैं, कितने उतरते हैं। So that guy was just saying, what are you so scared of? These yaks stay between humans every day. Yeah, so the thing is that we are experiencing yaks for the first time. So naturally it's natural for us to be scared. I mean, they're just so huge. I mean, it's just intimidating when you look at them. Take support of rocks. Oh. Where are you falling, Baba? I told you to give me a hand. Okay, but I would have stopped there. As if you would have fallen over there. I would have stopped somewhere. After falling and breaking a tooth or two. So unfortunately we had to take the same path down that we took up. As I told you, the president is in town and the alternate route was passing through the restricted area. So no luck there. Anyway, it was a good trek. Back to civilization. Mask on because we are back in the city. Yeah, mask on time. So after the huge yaks, we've come across a huge dog. Such a beauty. Such a beauty. ये काटेगा तो नहीं? नहीं। पक्का? मैं जाऊँ? कैश पर? Chicken? नहीं. Not interested. Good boy, Casper. Yes. Who's the good boy? कौन है तेरा बच्चा? First time, I was like little scared from a dog because of its size. आया. आ रहे हो, Casper? Okay, he's good. Charlie. Our trek has ended and Mr. Premji has been a fantastic guide.
He explained everything, all the kinds of trees, the herbs, the Ayurvedic properties, the history of the forest, history of Mashobra and everything. So it was a really very enlightening experience. We came to know so many new things through our guide Mr. Premji. So if you come to Mashobra, definitely go for the trek and specifically ask for Mr. Premji to take you on the trek because you will have a fantastic experience. So thank you Premji so much. Okay. Chaliye. I'm hungry. Are you hungry? The trek was so refreshing and so fulfilling in itself. I'm absolutely not hungry at all. I am hungry. It is surprising that I am not hungry. You are hungry. It's not surprising at all. You're always hungry. That's what I'm saying. Neet, beetle. You deserve it. Changes the taste quite a lot. What the police did is they stopped all pedestrian movement. First floor पे. So yes sir. Oh my goodness. दामिनी तक है, विरासत तक है. मतलब can you imagine? ₹1 लाख देंगे.